Hello everyone, welcome back to your channel Thakurs in Europe. And today's video, I would like to start with two disclaimers. Number one, my videos are not for the genius people who know everything. These are only for the common man who are really struggling with medical things, or they want to understand, or they're new to Poland. Because I'm pretty sure out of, let's say, 10, at least 5 or 6 people are there who really need it. And sometime back, I posted in Facebook that how is the medical system in Poland, and that post had a lot of comments, and then I realized lack of knowledge or lack of information or lack to know that how to avail some facilities causes dissatisfaction, and that might be one of the main reason of a bad experience for few people about the medical system. And that is why this video and initiative is an initiative for all those people who do not know how to avail, and I'm going to produce this video in multiple parts. So today's part is going to cover how to assign family doctor in Poland, and then how to avail various medical facilities in Poland, then Jutro, and then pregnancy, that means pre-pregnancy and post-pregnancy, what are the steps we need to take. We had a successful experience in Ujastek Hospital during the latest pregnancy, and thanks to all the staffs, thank all the friends and colleagues who helped us understand the medical system through the groups and people who are old enough in the system. And most important, thanks to Dr. Piotr from Jutro, who really helped me make this content and simplify things for all of our friends in Poland, especially the expats one. And this video is for all the expats community. Hence, I request you to share this video with all of your friends, because I'm pretty sure this is going to simplify your life. And my second disclaimer is about, please, all the medical related video which I'm going to bring in next few days, please watch them till end. I generally don't appeal the in any of my videos to watch videos. In fact, I ask them to everyone to check description and get required information which you might help. But today I'm asking you to see the demonstration so that it can help you search, because I am also one of those who really was not happy and was struggling to find out information because I was using wrong keywords. And that is why in this video I will also focus on using the right keyword and right way to assign a family doctor while choosing in patient portal. So let's start our video, how to assign family doctors in Poland. And I prepared some set of slides, and I would like to thanks the all the people who have supported me in making this video with their information. And let me tell you how this family doctor helps you, because a lot of people from various part of Poland, they said they have the family doctor appointed, but problem is they are not able to talk to them, they are not able to understand them. So in that way it is not actually becoming effective. So do you know, or are you aware that even if you are just enrolled for NFZ, for example, students or the people who just have NFZ, they don't have facilities like Medical or LexMed, NLMed, or Jutro, or any service providers, how they can avail these facilities. So if you select them from your patient portal as a NFZ, family or primary healthcare physician or general practitioner, you can still avail any of these facilities like LexMed and NLMed. There are certain set of services which I'm going to discuss in the further slides. So let's start the video now, and I'm going to share this slide with you. So here we are going to cover how to appoint family doctor, midwife, nurse, GP, POZ using patient portal or directly under NFZ, and what are the difference between them, so that it can help you decide what exactly you need. So and here you can see the link. When you click on this link, you will be redirected to the page where it says people age 65 plus and children are entitled to free medicines. So when you click on this link, it will take you to the portal where it will give you the list of all the medicines which are free under NFZ, like you can see here. And we'll cover further when we move on the videos. When you will log into this, you will get to see the list. So let's move back to our presentation. Now, uh, one more query I got to know, that whenever you see any apteka or chemist shop with a mark called NFZ, it means you can get above listed medicines free of cost, and also for non-listed medicines at discounted NFZ prices, especially the critical medicines, which I'm going to show in some time. But before we start, let's do this. Let's understand these terminologies, because whenever you visit healthcare centers in Poland, especially the hospital one,
it's very tough to understand because everything is in Polish. And if you know these terminologies, it will help you understand what is where and what. So first we start like doctor. Doctor stands for Lekarz. Doctor is known as Lekarz here. Hospital is Spital. Midwife is Polozna. Nurse Pielgrzymka. Outpatient clinic Z. And pardon me if there's a incorrect pronunciation, but this is how it looks like. And general practitioner Lekarz Rossini. Appointment visita lekarska. Cabinet means consultation rooms where you meet the doctor. Especially when I visited Jessic Hospital, I was seeing a lot of cabinets written everywhere outside the room and the number. So probably now I know that it means the consultation room. Then there are outpatient physiotherapy, which means physiotherapy ambulatory, and then this is for home physiotherapy for the people who are unavailable to leave their homes due to health conditions. So just note down these words, take a screenshot of this, and visit any healthcare center, and it might simplify your life to understand a lot of things. Now, before we move, as I requested in the beginning of the video, I'm going to show you a lot of demonstrations. That's why it's made very necessary or mandatory to watch this video till end, because you won't understand and then you will not get good results, and as a result of which you will not be happy with the video. So please watch it carefully. Before you access the patient portal, I suggest you to install the plugin, especially in the Edge. And there is something called polished keyboard layout. As you can see here, I have these layouts in of keyboard in the laptop. So polished keyboard layout is very necessary because there are a lot of names or alphabets which must be polished. And note down a key called alt gr in your keyboard. You will see a key just beside the control and arrow keys. This is alt gr along with the alphabet you need to press. So for example, if you are selecting this address, if you simply type REKAW, you will say no result found or no facility found at this location. But if you just change the keyboard layout to polish and then press Alt and E, you get a lot of results under this category. So that is the reason this is a disclaimer. I suggest to first do these things. What? First is installing translator plugin. Second is polish keyboard layout, and third, you remember this kit all keyboard all or key all gr plus alphabet. So this will help you access the various locations using the right keywords. And when you are trying to fill a form, always turn off the translator and keep it to the original version so that it is able to identify the right message which you're searching. I'm going to show you in the demonstration further. So now, before we move ahead, let's understand various terminologies which I have already discussed. And now let's understand what are basically general practitioners or POZ clinics, or you may have seen when you walk somewhere outside on the road, you see a lot of places where it says it's POZ clinic, POZ clinic, and sometimes you say see this called Lekarz Podstawowych Opieki Zdrowotnej. So basically, you can consider PONZ. This is the full form of POZ clinics, which in English means is primary healthcare doctor or general physician or general practitioners. And as I said in the beginning of the video, you can also, even if you have not opted from the office, you can still use Jutro, LuxMed, Medicover, these facilities as your POZ centers. And for example, this is the screenshot taken from LuxMed. And LuxMed, when you log in, you see this option where you can simply click on submit your POZ declaration online. So any service provider you choose for your primary or general physician or general practitioner health provider, you need to submit this POZ declaration form, which you can do either online or you can visit any of the centers. Like I visit Jutro Center quite frequently, and I have been very satisfied so far with the services here, and that's why I recommend this as well. And along with that, also I have some good experience with Medicover. So I mean, I cannot compare which one is good, which one is bad, but all I can say is you can avail any of these facilities if you are opting for this patient portal and you are submitting declaration, which you can do online, or you can visit any of these center of your choice and you can submit declaration there. So now let's see what are the service provided under NFZ, which is primary healthcare. It doesn't matter if you have opted for Medicover, Jutro, Inelmed, or LuxMed, you may get fellow facilities in primary healthcare. All are good, just a matter of syncing with the right doctor based on your requirements. And like I am syncing with Piotr, and he's clarifying most of my doubts, and he's very helpful every time guiding me. So like that, if you find doctor nearby you, you can definitely consult your friends for the better advices. And once you know, then you can visit the patient portal.
You can log in here and then you can opt for your physician doctor, which I'm going to send you or share with you in few minutes in the further slides. Now, most important thing is how your primary care physician or your family doctor, in other words, can help you. So you can just click on the link, and yes, most important thing is I have shared link in the description for all these uh, uh, questions, so that you can directly click on it and you can see what your primary care physicians or general practitioner can do. So it says general practitioner operates within the public health services under a contract with National Health Fund. So if you have enrolled for NFZ, they cover hit-risk diseases and gives advice. Uh, you can determine the your diagnose the problem and monitor it, and also he can give you advice or refer to the various centers. For example, if you need physiotherapist, he can refer to physiotherapist, ortho or other branch, or internist or hospital. Your general practitioner is the first person who knows your work very closely, who knows your medical history, and he can guide you or she can guide you properly on the next course of action for any kind of treatment. Now let's move to the this thing. Second most important point I wanted to tell you that in primary healthcare system or by your general practitioners, these are the tests which you click on the link I have shared in the description. You can click on this. For example, let me click here. So these are the list of various kind of diagnostics which you can get under NFZ free of cost. However, there are certain diagnostics which is called budget interested uh, diagnostics. So if your, let's say, your general practitioner or POZ healthcare advisor have recommended you some of the tests which are budget interested tests, then what basically NFZ does, NFZ talks to the NFZ has various tie-ups with the center where they have negotiated the prices, and they try to make sure that even if you have to pay for these tests, they are very nominal prices, or they are the best prices which you get money so that you can also save your money. But these are paid tests, so always remember, if it is budget interested tests, it is paid, it is not free. And you can check for this link for more details. So I hope it is very clear to you. So first point, what your primary healthcare physician or general practitioner does, or what he can do for you. I have shared in the previous slide what are a link. And then here are the list of the tests. And now let's start with the patient portal. Most important thing, how you can appoint a family doctor for yourself. So here, when I log into the patient portal, I see I go to my account, and then I have an option of submit a new POZ declaration. So here I have the date of login, my date of birth, PESEL, and then here is the video ship which I need to choose. And many times, like when I was doing it, I was really facing problem. Of getting I was not getting any option, but later I could find out, because the translator was on, it was not able to recognize, and I was using the wrong keyboard. Because of this, I was not able to get any result. That's why in the beginning of the video I have suggested you to show turn off the translator, or maybe let me try to show you a demonstration. um, so let's say I click on this patient portal and I log in here. uh, I log into IKP. Then I click on trusted profile. And if you remember from my first video, for all these things, you should have a trusted profile. If you want to simplify your life, please refer to my first video on trusted profile, so that you can have it. So welcome back. So this is how when you log into the patient portal, this is how it looks like. And as in the beginning of the video, I was talking about free medication. So when you can see people age 65 plus and children are entitled to free medicines. See the list of prescription, and if you're logging in for the first time, you will have to fill in your contact details and to receive OTP and all. So when you click here on free medicines, here you get the list of
medicines which are free under NFZ, and whenever you see this NFZ affiliated or Aptega, you can go there and you can get these medicines free. So once you log into patient portal, you get a window like this. You can click on my account and then you get date of birth and your PESEL and your location. If you have not filled, then you need to fill it. But as I requested earlier in the beginning of the call or our meeting, that when you click on this, always switch off the translator to original and change the keyboard layout for to Polish, and then you can use it using the special characters like O, using the Alt GR plus the key. And let me show you really in the patient portal, which is here. So here you can see that I have used this right. So here I have just changed this to, for example, if it is translating, it's like this. I will make it to original. Then I can put the Ulisa, your viewership, your Krakow, and then address, and then your flat number, mobile number, and details of email ID. Then here we need to select the facility. So first you need to choose Malopolsky or whatever it is. So here you can see if I choose, let's say if I'm in Warsaw, I can choose Mazowiecki. And then here I can choose any city. I don't know any city in Warsaw, but let's say, for example, this or anything, then it will display the facility. So let me select Malopolski. And in Malopolski, now I can choose Krakow, and then you can see here. You need to be patient when you click on this because when you choose Krakow, it takes some time to load the facilities here. So now you have list of all the facilities which you can opt for your primary healthcare general practitioner. But if you want specific to the area, for example, I selected Jutro, so I selected the address of the Jutro, which is C and then special character Z. So I press Alt GR key, which is beside the arrow key, and then Z, then it comes like this, then CZY, and then again, I think this is the one. Now when I select this, I get an option of selecting Jutro. So I can choose any of this facilitation center, and then I can sign the declaration. Now I can submit the declaration remotely, and I can sign in using my trusted profile. That is the reason I suggested to use trusted profile in the first video of medical in Poland, because trusted profile is something which will simplify your life like anything. So now, for example, if you want to choose Podgorska, you can choose Podgorska, and then here you can choose any of the facilitation center. So then after it tells you that in a current calendar year, you have a limitation like first time or second time, third time or subsequent time. You can choose the family doctor or a nurse, and you can change if you are not satisfied with the family doctor or nurse or the general physician. So as you can see, please note that in case you can as I explained just now, you can choose and change family doctor, nurse, midwife also if you are not satisfied with the chosen doctor for a limited period of time in a year free of cost as shown below. Always refer to patient portal for updated information. And in this case I tried to choose Luxmed, but it got rejected saying that they are already full. So please be ready for those kind of messages as well. As I selected Utro and got a message that I have already signed declaration with them. So that means in my children case, I somehow managed to select this Vedovika AW and I got confirmation. I'm going to show you in further slide. So this is about me. So because I already have signed declaration which I submitted physically at the Jutro center, hence it was not applicable for me. And but for my children, I selected this Luxmed, and then in NFZ it got approved, and I can show you how you can do for your children. So same profile. If you are the primary registrar of ZUS and NFZ, then your children profile will be under you, and until the children is age of 18, and after 18 they get handover of their own profile. And if there is there is a student in Poland studying in a college, they can also opt for an NFZ facility is in somewhere around 70 zloty, which I recently got to know. So you can opt, students can also opt for NFZ. It is really good, and then opt for Medicover and all those things using NFZ facility. But here you can click on online patient account, and when you click on that, you get a window like this. Child account up to 18 years of age. Click on C. When you click on C, you have children's account access. You can authorize a loved one, for example, your wife also, and you can share the data of your children with nurse or pharmacist.
And you can apply HIC card as you already know in from my first video about HIC. So when you click on that, you get the data like this. And then when you sign and submit declaration selecting the appropriate medical facility, you get a declaration ID, you get date of issue and the doctor or nurse, whatever you have selected. And in the last, you have this issued thing. And when you do that, you might get these kind of messages. So you may see rejected or cancelled like I got. Errors are called declaration was submitted by the patient in a different way, signed paper declaration at the clinic. Because once I visited Jutro, and just imagine it took 1.5 years for me to get a family doctor, and that too I did by visiting Jutro, because at that time I was not aware that Medigava, Jutro, Luxmed all can be done under NFZ. And now since I know, I don't have to do it. But then I submit it for my child and see what a message I got. The doctor for whom declaration has been submitted has already reached the limit of patient and is not collecting declaration. This kind of error messages or negative rejection you get. So no need to worry in that case situation. As you can see, uh, you can choose another facilitation center or POZ facilities and submit the request once again. And like I did for second time and I got approval, I can show you now. So here, when you submit the request, you get a successful submission message like this with declaration ID. Then you get POZ acceptance. Like this is for my son, I got acceptance. And then once you get accepted, you get the third email with the contact number of the doctor facilitation center where you can call and book an appointment when you need it. So this is how you can set up your family doctor for your family in a simple easy way from the patient portal without the hassle of language or going anywhere. So whenever you're choosing your family doctor, it is always a good idea to consult maybe your friends and family or anyone who is consulting and take the feedback of the doctor and show that if they know the language, especially Medicover, Jutro, and Lexmark, they have more English speaking doctors. Sometime back, one of my friend asked, what is the use of these other facilitation when we have doctors free in NFZ? So I very simply told them that some of the places in Poland where you don't have enough English speaking doctor in NFZ, Medicover, Jutro, Lexmark, Enrolment, these are coming as a blessing, especially for the foreigners, because in the beginning when we are in Poland, it's not possible to easily learn Polish language, and it is really definitely a problem if you need medical facility in the beginning. So these kind of facilitation or assigning the primary doctor or general physician really simplify your life in Poland for you and your family. And they can help you in a lot of things like issuing referral for ortho, for rehabilitation programs or other consultations. So you can just refer to the link which I have shared in the description on what all things are covered, what all tests are covered by these NFZ as a primary healthcare by the general practitioner or physician. And now, because I'm going to cover a remaining topic of how to avail various facilities in Poland, medical facilities in Poland, for example, SOR facilities or NPL facility, odd working hours, medical services, and how you can check what medicines is available at what aptica. Like this few of the very important topic I have prepared for you for my medical part 2, but for that I really need your support. And as you already know, I have covered EHIC card called European Health Insurance Card video, which is necessary when you are out of the Poland in European Union and if you need medical facility. So please go through video. If you have not made this card, it is very helpful when you are on international travel. And then medical part 3, Jutro, pregnancy and checklist during pregnancy and post-pregnancy pediatric services. All this will be in the playlist of medical in Poland. And this will simplify your life. That's the ultimate goal for all of us. And my all videos are selfless services for all experts. Either by WhatsApp group or videos. I already have a group for supporting expats, especially a health and education group for children. I am maintaining for all the expats community, and we all try to help each other without any greed, or it's all selfless services. So we will request you to support by liking, subscribing, and sharing with the people in need. And it's free for you, but it really helps a lot to content creators. If you do not believe me, try to answer 5 to 6 calls every day, that to unknown numbers, and see how it feels, because I do it every day for more than 15 to 20 people, and unconditionally, and it cost me a lot of time. I still do it hoping that someone in need might get help, because I didn't get help when I came in the beginning. Hence your like, share, and subscribe are just a way to show respect to the efforts. We lack of knowledge is the probably main cause of frustration anywhere in the world. So if you know things, if you know how to avail, it will simplify your life. It will help
everyone you know around you, and it will make your life simpler in Poland. So please like, subscribe, and share this channel, share this video with all the friends in need. And if you have any questions, comments, or feedback, please feel free to write in the comment box, because it will help me in my medical part 2. If you have any contents, you can share with me. And if you plan to opt for Jutro as your medical provider, they are in 8 cities, so you can definitely subscribe. I've shared the link in the description, which you can use to register them as a POZ clinic. And let's stay in touch. Let's support each other. Let's make the world more beautiful by supporting and helping each other. Please like, subscribe, and share Tacos Europe, and stay tuned. Please bookmark the playlist for medical system in Poland, because it will simplify your life in Poland. You can stop the video here. So नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज है. वेलकम बैक टू योर ओन चैनल थाकोस इन यूरोप. मैं मेडिकल पार्ट 1 लेके आया हूँ आपके लिए हिंदी में. और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसका 1.5 ईयर से मैं खुद वेट कर रहा था. तो अभी रिसेंटली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा जैसे हॉस्पिटल में. एंड सक्सेसफुली वी हैव गॉट अ बेबी गर्ल, एंड इट्स वेरी हेल्दी एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट. इट वेंट फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, एंड जैसे हॉस्पिटल डिड एक्सलेंट जॉब. इवन पेडिट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, मिडवाइफ, नर्सेस, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम. और इसीलिए मैं मेडिकल पार्ट 1 लेके आया हूँ, मेडिकल पार्ट 2, मेडिकल पार्ट 3, ऐसे करके कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करूंगा, ताकि आपको ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और आप चीज़ों को सिंपल, साधारण, आसान भाषा में समझ सकें. चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले आज के वीडियो का जो टॉपिक है हमारे पास, वो है हाउ टू असाइन फैमिली डॉक्टर टू योर फैमिली, और जनरल फिजिशियन टू योर फैमिली. क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोगों ने ऑप्ट तो किया, लेकिन उनके पास जब कॉल आया तो वो पॉलिश में आया. और पॉलिश में आने का प्रॉब्लम क्या हुआ कि अभी हम लोग नए हैं, तो हम लोग को पॉलिश लैंग्वेज तो आती नहीं है. इट्स नॉट इजी टू लर्न इंस्टेंटली. और इसी वजह से क्या हुआ कि जब हमें एक डिक्लेरेशन साइन करने जाना होता है, तो वो डिक्लेरेशन हम लोग साइन नहीं कर पाए. ठीक है. तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच, अभी तक हम में से बहुत से लोगों ने, अगर मेडिकवर रिलैक्समेंट फैसिलिटी नहीं है, तो हम लोगों ने प्रॉब्ली फैमिली डॉक्टर का कोई भी बेनिफिट लिया नहीं है एनएफजी में, और ये फ्री होता है. तो ये है सबसे पहला. थैंक्स टू डॉक्टर प्योटर गिबस, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में हमें सपोर्ट किया, और फैमिली पार्ट 2, मेडिकल पार्ट 2 वीडियो बनाने में भी बहुत मदद किया उन्होंने. और बहुत ही सारे डाउट क्लियर किए हैं कि नर्स, मिडवाइफ, नर्स और इंटर्निस्ट, ये सबके डिफरेंसेस क्या हैं, कैसे कैसे एक्सेस यू कर सकते हो. तो थैंक्स टू हिम वेरी मच. एंड जब आप पेशेंट पोर्टल में लॉगिन करेंगे, ये वाला लिंक है, ठीक है, ये वाला लिंक है आपका patient.gov.pl. इस पे लॉगिन करेंगे तो सबसे पहला ही विंडो आता है, जिसमें आपको बताता है कि पीपल एज 65 प्लस एंड चिल्ड्रंस आर एंटाइटल्ड फॉर फ्री मेडिसिन. और जब उस लिंक पे क्लिक करोगे, तो आपको पूरा लिस्ट ऑफ द मेडिसिन आ जाएगा जो फ्री है. और कई बार आपने देखा होगा एनएफजी लिखा होता है जो एप्टेका यानी केमिस्ट शॉप्स पे, तो हमें समझ नहीं आता है एनएफजी का मतलब क्या है, क्या ये दवाइयाँ फ्री हैं, क्या ये पेड है. तो जो ये लिस्ट है ना, इन लिस्ट ऑफ मेडिसिन में जो दवाइयाँ दी हैं वो सारी फ्री मिलती हैं, और काफ़ी दवाइयाँ जो है वो डिस्काउंटेड प्राइसेस पे होती हैं. तो वो एनएफजी शॉप्स जो होती हैं, एनएफजी एफिलिएटेड एप्टेका शॉप्स या केमिस्ट शॉप, वहाँ पर आपको मिलता है. मैं जूस एनएफजी में डिफरेंस किया वो आपके पीपीके वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी. ये कुछ कीवर्ड्स है जो आप अगर याद कर लो, तो आप जब भी यहाँ के हॉस्पिटल या कोई भी मेडिकल सेंटर को विजिट करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा. प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल है, मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया है, तो आप कोशिश कर लीजिए. लेकिन कैबिनेट लिखा है तो समझ जाइए कंसल्टेशन रूम है. अपॉइंटमेंट होता है वेटर लेकार्स का, डॉक्टर होता है लेकार्स, हॉस्पिटल हॉस्पिटल, मिडवाइफ प्लोजना पोलोइना, नर्स पियलनियार का, आउट पेशेंट क्लिनिक रिसोर्सनी. Pardon me for the wrong pronunciation. And Domova physiotherapy means home physiotherapy for people who are unavailable to leave their home due to health conditions. जब भी आप पेशेंट पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए, जैसे कि ट्रांसलेटर लगा लीजिए इंग्लिश का. और ये ऑल्ट जीआर कीवर्ड है जो आपके एरो के बगल में होता है, कंट्रोल के बगल में इनफैक्ट, तो वो यूज कीजिए अल्फाबेट के साथ अगर स्पेशल कैरेक्टर्स पॉलिश टाइप करने हैं. और तीसरा कीबोर्ड लेआउट है पॉलिश का, वो ऐसे इंस्टॉल कर लीजिए, तो इससे आपको पेशेंट पोर्टल एक्सेस करना बहुत ही ईजी हो जाएगा. स्पेशली ये देख रहे हैं ई जो है ये स्पेशल कैरेक्टर है, तो ये जनरली आप टाइप करते हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता है. ठीक है. जनरल प्रैक्टिशनर क्या काम करता है, वो आपके आपका प्राइमरी हेल्थ केयर एडवाइजर होता है. आपके जनरली जब भी मेडिकल इश्यूज होते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स. ऑड वर्किंग आवर्स के लिए एनपीएल करके एक फैसिलिटी है, जो मेडिकल पार्ट 2 में मैं कवर करूंगा. बट आपको पता है, क्या आप जानते हैं इस बारे में कि आपने अगर, जैसे आपके ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने अगर मेडिकवर लक्ष्मण ये फैसिलिटीज नहीं डिडक्ट किया है और नहीं दिया है, तो भी आप प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर अपॉइंट करवा सकते हैं मेडिकवर लक्ष्मण का. जैसे कि ये नीचे वाला आप देख रहे हैं लक्ष्मण का है, इस पर क्लिक करेंगे तो पीओजे डिक्लेरेशन करके लक्ष्मण की फैसिलिटी विदाउट, मतलब एनएफजी के अंडर भी आप ले सकते हैं. ठीक है. इसको बोलते हैं नेशनल हेल्थ फंड फैमिली डॉक्टर. और उसके बाद ये आपका जो लिंक है, आप जब क्लिक करेंगे
ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको चेक कीजिए। तो ये आपको बताएगा प्राइमरी केयर फिजिशियन आपके लिए क्या क्या कर सकता है। आपको रेफरेंस दे सकता है हॉस्पिटल्स के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, रेकमेंड कर सकता है नेक्स्ट लेवल कौन से हॉस्पिटल जाना है। स्पेशली मैंने जब यूत्रो विजिट किया था, क्योंकि मेरा जो प्राइमरी हेल्थ केयर जनरल प्रैक्टिशनर है वो यूत्रो है, तो एंड डॉक्टर पियोटर इज माई डॉक्टर। सो उन्होंने तो पूरा अच्छे से हमें प्रिंट आउट निकाल के पूरा बताया, इसमें यहाँ अपॉइंटमेंट इतने बजे है, इतनी तारीख को, ऐसा करके। इट वाज अ वेरी गुड थिंग, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा था। बट आप अगर आपके ऑफिस ने ऑप्ट नहीं किया तो भी आप एनएफजी में मेडिका और यूथरो, एनामेड और लक्समैन की फैसिलिटीज ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पेशेंट पोर्टल पे। ये जो लिंक है ये वो लिंक है जिस पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टेस्ट फ्री हैं, और लेकिन कुछ बजट इंटरेस्टेड टेस्ट होते हैं जो एनएफजी में होते हैं, वो उनमें आपको पे करना पड़ता है। बट कहते हैं कि वो सब्सिडाइज रेट होता है, क्योंकि एनएफजी आपके बिहाफ पे बेस्ट नेगोशिएशन करके बेस्ट प्राइस देने की कोशिश करता है। तो ये भी अच्छे होते हैं, लेकिन बजट इंटरेस्टेड टेस्ट लिखा हो तो आप समझ जाइए कि पेड है। जब आप पेशेंट पोर्टल पे पहली बार लॉग इन करेंगे तो आपको ऐसा एक विंडो आएगा। आप सबसे पहला विंडो तो आएगा कि कौन कौन सी मेडिसिन फ्री हैं उसकी लिस्ट वाला, और उसके बाद माई अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा विंडो आएगा पैसल वगैरह के साथ। चलिए एक डेमोस्ट्रेशन देखते हैं कि जब आप फैमिली डॉक्टर असाइन कर रहे हैं तो कैसे ढूंढे अपना हेल्थ केयर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये विंडो आएगा, आपने यहाँ डिटेल्स अपनी सारी भर दी, और ये चूज फैसिलिटी का ऑप्शन है। सबसे पहला काम क्या कीजिए, यहाँ जाके शो ओरिजिनल कर लीजिए। जब आपने इस पे शो ओरिजिनल किया है तो आपको ये तो देखिए आपका एड्रेस हो गया। ठीक है, यहाँ आपने सेलेक्ट कर दिया, जैसे मैंने कुछ ऐसा सेलेक्ट किया, आर ई के। अब देखो ये ई आ रहा है, ठीक है, क्यों आ रहा है, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले रहा। मैं ऑल जी आर दबा के ई करता हूँ तो देखो स्पेशल कैरेक्टर आ गया। अब मेरा एड्रेस इजीली ढूंढ लेगा है। ठीक है, यहाँ एड्रेस वेड्रेस डाल सकता हूँ, फोन नंबर ईमेल आईडी डाल दूंगा। उसके बाद मुझे मेडिकल फैसिलिटी सेंटर चूज करना है, तो आपका जो भी वीडियोशिप है, जैसे क्रैको का मेलेस की है, वार्सो का मेजोवी की है, तो आप वो भी चूज कर लीजिए जो भी आपने चूज किया। उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए क्रैको, तो आपका ये ऑप्शन आ गया। थोड़ा सा वेट करना है तो आपको ये नीचे यहाँ फैसिलिटेशन सेंटर्स हाईलाइट कर देगा, और उनमें से आप चूज कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, जैसे कि देखिए ये आ गया, ये सारी लिस्ट है। अब इनमें आपकी कोई प्रेफरेंस है, जैसे इर्गो मेड यूज करना चाहते हैं, एनल मेड यूज करना चाहते हैं क्या? जैसे मेरा प्रेफरेंस जूतरो था, तो मैंने उसके लिए क्या किया, यहाँ पर बाकी देखिए इनल मेड वगैरह सारे ऑप्शंस हैं। आप अपने फ्रेंड्स को कंसल्ट करके भी, जो ऑलरेडी कंसल्ट करें, इनमें से चूज कर सकते हैं अपना फैमिली डॉक्टर। चलिए मैं यहाँ चूज करता हूँ CZY। जैसे आप अगर यूथरो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए यूथरो के, आपने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सीधा जाके नीचे एक साइन डिक्लेरेशन का ऑप्शन आता है, तो ये फिल करके। और अगर आप फर्स्ट टाइम चूज कर रहे हैं तो आपका, क्योंकि साल में आपका लिमिटेड होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम आपका, जैसे नर्स या डॉक्टर आपने जो चूज किया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको चेंज कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ से डिक्लेरेशन साइन करके कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम जब किया तो मेरा एरर आया था कि दे आर ऑलरेडी फुल। तो फिर मैंने दूसरा अपॉइंट किया, क्योंकि लेक्समेट का जो डॉक्टर मैंने चूज किया था वो फुल आया था, और जूत्रो का मैंने किया तो उसमें आया था कि वो ऑलरेडी साइन द डिक्लेरेशन, इस वजह से मेरा रिजेक्शन आया था। तो इसीलिए ये भी एक पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने थर्ड टाइम फिर अपने बच्चे के लिए किया, बच्चे वाले प्रोफाइल से, तो ये वाला अप्रूव हो गया था। ठीक है, और जूत्रो क्योंकि मैं ऑलरेडी फिजिकली जाके फॉर्म साइन करके आ चुका हूँ, तो ऑब्वियसली बात है, तो मेरे को दोबारा फैमिली डॉक्टर अपॉइंट करने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना, और मैं कोई और सेंटर करता हूँ तो डेफिनेटली मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ, इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द यूथरो। तो ये हो गया पहला तरीका कि प्राइमरी एप्लीकेंट, जैसे मैं प्राइमरी अर्नर हूँ और मैंने जूस में अपनी फैमिली को एनरोल किया, तो जो भी 18 ईयर से लेस एज का माइनर है उसका जो प्रोफाइल है वो मेरे प्रोफाइल के अंदर दिखेगा। अगर कोई इश्यू आपको दिख रहा है तो आप एनएफसी को कांटेक्ट कीजिए। पहले तो जूस में चेक कीजिए कि वो एनरोल्ड है भी कि नहीं, अगर है तो आप एनएफसी को कांटेक्ट कीजिए, दे विल फिक्स द इशू। मैं विडोविका गया था, यहाँ पर विडोविका AW, यहाँ पर एनएफसी सेंटर है, तो उन्होंने बताया कि ये सब करेक्शंस वहाँ से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चूज किया, ये सेलेक्ट किया। अब पेशेंट पोर्टल में बच्चे का कैसे होगा, तो देखिए जब आप ये ऑनलाइन पेशेंट अकाउंट पे लॉगिन करने के बाद ये क्लिक करेंगे ना, तो ये सब वाला विंडो आएगा। और देखिए ये ऊपर ही आ रहा है ना, पीपल एज 65+ चिल्ड्रन आर एंटाइटल्ड टू फ्री मेडिसिन, इस पे क्लिक कीजिए। और जो भी लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर के मेडिसिन आ रही है, तो आप एनएफजी सेंट किसी भी एप्टिका में विजिट कीजिए, वहाँ से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो यहाँ बच्चे का प्रोफाइल है, इस पर सी कीजिए, फिर जो चिल्ड्रन अकाउंट पे क्लिक कीजिए। आप उसका जो ऑथराइज कर सकते हैं अपने किसी और फैमिली मेंबर को भी, जैसे आपकी वाइफ है उसका सेपरेट पेशेंट प्रोफाइल होगा, क्योंकि उसका सेपरेट ट्रस्टेड प्रोफाइल बनाया होगा। अगर आपको ट्रस्टेड प्रोफाइल का आइडिया नहीं है, प्लीज रेफर टू माय फर्स्ट वीडियो ऑन ट्रस्टेड प्रोफाइल। ठीक है, आप यहाँ से नर्स और डॉक्टर्स भी असाइन कर सकते हैं इसको। उसके बाद क्या है, ये आपका डिटेल आ गया, विजिट योर चाइल्ड्स अकाउंट। उसके बाद फिर जब मैंने साइन इन करके डिक्लेरेशन किया तो ऐसे डिक्लेरेशन आईडी आ गया, डेट ऑफ इश्यू आ गया, और डॉक्टर और इश्यूड स्टेटस आ गया।
उसके बाद ये इस तरह के एरर आते हैं कि अगर आपका अप्रूव हो गया तो अप्रूव आ जाएगा मैसेज, और नहीं तो जैसे मेरे केस में आया था कि डिक्लेरेशन इज ऑलरेडी साइंड बाय पेपर डिक्लेरेशन एट द क्लिनिक, तो मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं। अगर मैं सेम ही प्रोवाइडर को दोबारा से कर रहा हूँ तो वो करने की जरूरत नहीं है, साल में एक बार ही करना होता है। और अगर मुझे चेंज करना है तो डेफिनेटली मैं किसी और प्रोवाइडर के साथ कर सकता हूँ। एंड सेकेंड वाला जैसे मैंने ये किया था तो वो डॉक्टर उनके पास नहीं था अवेलेबल, तो उन्होंने कहा कि उनका जो लिमिट है ऑलरेडी रीच हो चुका है, ठीक है। और अगर अप्रूव हो जाता है तो ऐसा मेल आता है कि थैंक यू फॉर सबमिशन। पहले सबमिशन का एक मेल आएगा, दूसरा आएगा आपको एक्सेप्टेंस का, और तीसरा जो आएगा आपको वो ऐसा कॉन्टैक्ट आएगा कि कॉन्टैक्ट नंबर के साथ कि रिक्वेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड, जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं nfz@widowica तो आई होप जो वीडियो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको समझ में आया हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों में किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है मुझे भी कई चीज़ें हिंदी में ज़्यादा इजीली समझ आती है और इंग्लिश में नहीं आती है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। एंड बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई सर हिंदी में भी वीडियो बनाया करो, तो इसलिए मैं हिंदी में लास्ट का कुछ पर्सन कवर करता हूँ। आने वाला वीडियो जो है मेरा मेडिकल पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप वेरियस मेडिकल फैसिलिटीज़ को पोलैंड में अवेल कर सकते हैं। EHIC कार्ड पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, प्लीज रेफर टू माय फर्स्ट वीडियो ऑन EHIC कार्ड। यूत्रो जो ऐप है उस पे मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, और मे बी इन फ्यू डेज आई विल गेट ऑन डेट। प्रेगनेंसी एक सक्सेसफुल केस है, तो आई नो अबाउट लॉट अबाउट प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी प्रिपरेशन, सो आई एम ब्रिंगिंग अनदर वीडियो ऑन दैट। सो प्लीज फॉलो माई प्लेलिस्ट, आप चाहें तो उसे बुकमार्क कर लीजिए, ताकि आपको मेडिकल रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो तो आई विल ट्राई टू कवर, और आपका कोई एडवाइस और फीडबैक सजेशन हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कीजिए, जिसे मैं मेडिकल पार्ट 2 एंड 3 में कवर कर सकूं। जितनी भी वीडियोस आप जानते हैं सेल्फलेस है, अनकंडीशनली हमारे ग्रुप के सभी मेंबर सपोर्ट करते हैं। किड्स हेल्थ एंड एजुकेशन है, जिसमें हम हेल्थ एजुकेशन फॉर एक्सपर्ट्स कम्युनिटी डिस्कस करते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी हो फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपके लिए फ्री है बट मेरे को इससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि देखिए यूट्यूब से कुछ पैसा वैसा नहीं आता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी रीच ज़्यादा होती है, इसलिए मैं आपको बार बार अपील करता हूँ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड आई डोंट नो, मुझसे डिस्कनेक्ट होने का और कोई रीज़न तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारा मैं आपको आपसे कुछ ले नहीं रहा, दे ही रहा हूँ। इट्स अ फ्री इन्फॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग टू ऑल द फ्रेंड्स टू हेल्प देम टू मेक लाइफ सिंपल फॉर ऑल द एक्सपर्ट्स हियर। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी आपके फ्रेंड को ज़रूरत हो, क्योंकि मुझे 1.5 साल लग गया ये फैमिली डॉक्टर अपॉइंट करने में, और आपको शायद आप नए नए पोलैंड आएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको रेडीमेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो आई थिंक इतना तो बनता है कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट डालिए अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो। एंड लेट्स स्टे इन टच, लेट्स सपोर्ट ईच अदर, लेट्स ट्राई टू मेक द वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल बाय हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर। इससे सुकून मिलता है, जो थैंक्स मैसेज आते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। दैट इज व्हाट इज माय रियल अर्निंग। मैं आपको अगर अपना रियल अर्निंग दिखाऊं तो ऑनेस्टली मेरे पास अभी probably 5,000 से भी ज़्यादा थैंक्स मैसेज है लास्ट 2 years में, एंड दैट इज समथिंग विच आई रियली फील गुड अबाउट, एंड दैट्स माई अर्निंग। सो लेट्स स्टे इन टच, फॉलो फॉर मोर पार्ट 2 वीडियो। एंड अगर आप फैमिली डॉक्टर को अपॉइंट कर पाए हैं या साइन कर पाए हैं इस वीडियो को यूज़ करके, तो प्लीज़ एक मैसेज ग्रुप में आप अपना जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू सो मच for watching and keeping patience, and you have a good day. Let's see you in the next video, medical part 2 in Poland, and how to avail medical facilities in Poland. Thank you. You have a good day.